Hey guys, welcome you all. My name is Surya sir and today we'll talk about the NMAT 2022. Guys, NMAT is the exam conducted by the GMAT and yes, NMIMS one of the best institutes who accept the NMAT score. So guys, अगर आप NMIMS के different campuses के लिए target कर रहे हो, so is it worth it? Either Mumbai campus, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru one और the Indore one. यहाँ जाना क्या सही रहेगा guys? क्या placement stats वैसे है? Even cut off क्या होने वाला है? Because it also has the sectional cut off. Sectional time limit is there. Okay? और एक benefit भी अच्छा है NMAT का that you can choose any order of the section, right? आप सेक्शन कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो. सो फर्स्ट यू कैन चूज वर्बल एबिलिटी एंड सेकंड यू कैन चूज द क्वांट एंड डीआई एंड थर्ड वन यू कैन चूज द लॉजिकल रीजनिंग. ओके, सो बेस्ट तरीका रहेगा कि सबसे पहले आप वर्बल एबिलिटी को चूज करो, सेकंड वन गिव टाइम फॉर द लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड वन क्वांट एंड डीआई. सो गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड. हम बात करने वाले हैं कि इज इट वर्थ और नॉट टू ज्वाइन द NMIMS. So stay tuned with me, and if you have any doubts and queries in your mind, then ask me in the below comment section. And yes guys, don't forget to subscribe this particular channel because here you will get lot more videos. Now separate institute wise video will come in detail, that means about the Mumbai campus, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru one, Indore, why you should target or not. Okay, so if you like the video, hit the like button and do share to all your friends. So before moving further guys, we have launched the batches. You will get all these features under class: the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the selection process criteria. Either they include VAT, GD or PI. Okay, whatever selection criteria they will include, you will get preparation for same, and along with NMAT you can start preparation for MBACET, CAT, MAT, ATMA, ZAT, IFT, CMAT and SNAP and various other entrance exams. So call on respective number or visit our website manual.com/MBA-entrance and guys, book your seat right now. So let's talk about the first institute established in 1981, the Mumbai campus. Guys, one of the best campus among all, A+ accreditation. Now with respect to the NMIMS, here I'm talking about NAC with 3.59 CGPA. Guys, got category 1 university by the Ministry of HRD, and it is one of the few institute who is accredited by AACSB. Guys, in all over world there are very few institutes who has the accreditation of the same. Collaboration with top international universities, and again it also offers a dual degree MBA in decision science and analytics, that is nothing but the DSA, and the MSc in business analytics and the information management. So this dual degree program you can pursue through Mumbai campus and also deployed at USA. Okay, now if you want to target the Mumbai campus, then guys there are a lot of seats. With respect to the MBA program, specialization in all 4 domains, here you will get 600 seats. With respect to the HR, it has 120 seats, business analytics 120, digital transformation 60 seats and pharma management 120 seats. मैक्सिमम चांसेस है आपके मुंबई कैंपस के, बट वैन जब आपका स्कोर होगा 232 टू 235 इस रेंज में. गाइज इट ऑल्सो हैज सेक्शनल कट ऑफ. सो कैसे होना चाहिए? क्वांट में आपके होने चाहिए अराउंड 70, लॉजिकल रीजनिंग में होने चाहिए 70, एंड इफ यू टॉक अबाउट दी वर्बल एबिलिटी देन 75 टू 80. ओके, यहाँ आपका स्कोर होना चाहिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर देन 11,000. Now if you look at the fee structure then 11,95,000. guys, Mumbai campus की फीस सबसे ज़्यादा है, but is it worth? Look at the placement stat guys, highest package 57.65 lakh, and I already made the video NMIMS Mumbai why you should target. Okay, 57.65 guys, ये amazing stats आपको मिलने वाले हैं. Okay, after pursuing your MBA program from the NMIMS Mumbai, and the average package 23.07, almost सारे candidates को मिलता है 23.7 का package. So guys, और क्या चाहिए? So first target should be the NMIMS Mumbai if you scored 232 to 235 marks. Thereafter you can target the Bengaluru one, again one of the best institute in the south region. And don't forget guys, अगर NMIMS की बात करूँ then among top 25 private universities it comes at 5th place. Yes guys, and according to NIF ranking also. So seat availability 240, your cutoff should be 224 to 228. Fees 9 lakh and 2,000 rupees, and placement stats amazing, 19.58 highest package and 11.80 average package. If you talk about the Navi Mumbai campus then guys, यहाँ fee structure ऑलमोस्ट सेम है बैंगलोर से, 9,02,000. स्टैट्स यहाँ थोड़े से कम है, 16 लाख हाईएस्ट पैकेज एंड 11.65 एवरेज पैकेज. बट अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ मैं नवी मुंबई एंड बैंगलोर वन देन ऑलमोस्ट सेम. Okay guys, now seat availability 180 seats, cut off remains same for Navi Mumbai and Bangalore. Okay, 224 to 228.
8. नेक्स्ट वन इज द हैदराबाद कैंपस और यहाँ के जो स्टैट्स है काफी अमेजिंग है गाइस. फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम 9,02,000, कट ऑफ 210 to 215, सीट्स 240, सेक्शनल कट ऑफ आपके होने चाहिए 60, 60 एंड 65. दिस इज फॉर क्वांट, दिस इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड दिस इज फॉर वर्बल एबिलिटी. ओके गाइज, वर्बल एबिलिटी को ज़्यादा वेटेज है, आपको ध्यान में रखना है. और सो यहाँ काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है. ओके, प्लेसमेंट स्टैट सेज 22 हाईएस्ट पैकेज एंड 10.07 एवरेज. एंड द लास्ट वन द इंदौर. गाइज, कैंपस इज अमेजिंग, फैसिलिटी इज ग्रेट. ओके, और NMIMS यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कंप्लीट एक्सपोजर यू विल गेट. आपको इंटर्नशिप भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है. सीट अवेलेबिलिटी की मैं बात करूँ देन गाइज 120 सीट्स ओवर ईयर, कट ऑफ 210 to 215, फी स्ट्रक्चर 7,50,000, फीस यहाँ कम है. प्लेसमेंट स्टैट्स 21 लाख पर एनम का पैकेज, दिस इज द हाईएस्ट वन एंड द एवरेज 10.05. सो गाइज, वर्थ इट है. कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो, बस फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द Mumbai one. Thereafter you can target Navi Mumbai, Bengaluru, Hyderabad and the Indore. So this will be the decreasing order. Okay, जहाँ आपको टारगेट करना है. So your preference list should be the same. Now if you talk about the HR program at the Mumbai campus, okay, then fees remain same guys. उसकी भी जो फीस है 11,95,000. Okay, if you talk about the pharma management, then the fee structure is 7 lakh rupees. If you talk about the business analytics, then 9,02,000. And the last one, the digital transformation, 8,52,000. ओके गाइस, सो सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स आपके सामने हैं. नाउ और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल. एंड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके. गो टू द NMIMS वेबसाइट, अप्लाई देयर एंड देन रजिस्टर ऑन द NMAT ऑफिशियल वेबसाइट. एंड गाइस, जस्ट क्रैक इट. सो एक्जैक्टली हाउ guys, let's join our classroom coaching at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat. You will get all those features. Okay, and you can also interact live with us if you are outside Mumbai. Okay, call on 8828581455 or visit our website. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side guys. Any doubts, ask me in the below comment section. Okay, all the best for your career. See you in the next video.